Good Hi, good morning, morning. Dipti. Morning, Good ma'am. morning, good Good morning. morning, Good good morning, everyone. morning. Sonia, good morning. Good Very morning, good Saityaji. morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Very Good good morning. morning. Hi, John, the colorful one there. Good morning. Hi. Hello. Good morning, Beta Dipti. Very Good good morning. morning, everyone. And Good नमस्ते morning. आंटी. Very good morning. पता नहीं बहुत दिनों के बाद आप मुझे स्क्रीन पे सामने दिख रही हैं. So आज हम चैप्टर नंबर 21 कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम. आई थिंक ये सबसे यूज प्रैक्टिस होगी हम सबकी, है ना? So for everything that we do, magnificent outcome, magnificent outcome. Some people call it magical outcome, but it means the same. It really doesn't matter. You can still call it magical outcome, magnificent outcome, or miraculous outcome, or whatever it is, or the most beautiful outcome. But the end result of everything is pre-decided by us. So when we decide the end result, everything falls into place. And this is what is about today's practice. Because intentional living के साथ में, मतलब यही चीज हमको सीखी अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स. उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंटेंशनल लिविंग हम करते हैं, लाइक वी ऐड प्रिया को, आई हैव टू मेक द होस्ट वन सेकंड. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. So intentional living is what we call it. I mean, if we start living with intention, we start doing everything with intention, सब कुछ fall into place हो जाता है. Because biologically how it works is, according to the neural science, neuroscience, is that कोई भी चीज की image अगर हम download कर लेते हैं deliberately, we are deliberately downloading the image of any event that is about to happen today. Suppose if I have to go for a movie, I have to go to the movie hall to watch a movie, maybe in a mall. So I'll decide the outcome, and there are three people coming in, three different families or three friends or whatever it is. So all the three families, if I really want, एक हो जाता है ना, यार मूवी देखने जा रहे हैं, but then that family is always so late, और वो लोग कभी टाइम पे नहीं आते, अब मूवी छूट जाती है उनके साथ जाने से. तो ये सारी चीजें हैं ना अभी दिमाग में हो रही हैं, that if they come late, we are going to miss out on the movie. It's just half an hour left, etc., etc. So you decide that thank you, universe, that we also, or I'm so grateful that we, all of us, reached so well before time, and then we had a very good quality time, and we were well seated even before the movie started. So now आपने intention set कर दिया है कि पिक्चर शुरू होने के पहले हम सब पहुंच गए. पहुंच के, मतलब मूवी शुरू होने के पहले हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग हमने पूरी मूवी देखी इकट्ठे बैठ के, और मूवी शुरू होने के पहले ही वी वर सीटेड इन द मूवी हॉल. Okay, so when we actually do this kind of an intention for everything in our life, like any major event, जो major event होती है ना, जिनका हमको outcome positive चाहिए था कि पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी, there are so many things where we think that I don't know whether it will happen, I don't know whether I'll be able to do it, I don't know whether it will come out good, so I'm cooking, let's see how it comes out. So बहुत बार ऐसा होता है. I've seen so many people, it's a normal language, that let's see how it works out, let's see if it works out well, let's see, I hope sab theek ho jaye. So all this I hope, let's see, these are kind of doubts that are seated inside us. So these are all doubts that actually, like, make a difference to the outcome also. Because koi bhi cheez aap doubt ke saath, when you get into something with doubt, the end result will always be 60-70%, or maybe even lesser. It will not be 100% fruitful. Why? Because approach ही doubt की थी ना. Let's see, I really hope, सास बस चांस के ऊपर ही सब छोड़ दिया है. So, या पुरानी beliefs के कारण. Suppose 5 times you have baked a cake, all 5 times it has come out wrong. Wrong as in कभी sugar कम हो जाती है, कभी वो flat हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. All 5 times it was not very good. Okay, now the 6th time when you try, you are again like, let's see, I really hope, yeah, that the cake comes out good today, So I hope it will not come out good, because there is no surety energy in that cake when you're baking it. There is no, the energy in the cake is of worry and chance. Let's see, I'll try my best. Let's see, wo wali cheez. So, but actually when you say that, I'm so grateful that I baked such an amazing, delicious cake, and it came out so perfect beyond my imagination, and everybody loved it. Okay, and then there you sorted.
So you've already set that intention. Now you're entering something without any chance at play, without any doubt, without any nothing. So this is what magnificent outcome is. तो इसके साथ साथ रहना, and it is not always that you have to write it. You know, you can also do it orally. This practice जरूरी नहीं है कि लिख के करना है आपको. आप इसको मन से भी कर सकते हो. जैसे कोई भी चीज होने वाली है, वैसे हम आज तो लिख के ही करेंगे प्रैक्टिस वाइज, लेकिन वैसे आप इसको मन में भी सोच के कर सकते हो. Focused intention के साथ. Remember, E is equal to mc square, Albert Einstein. Okay, put energy into excellent outcome. Put energy there. Put energy into when you're writing a book, or you're writing a letter, you're typing an email, or you even texting a message, communicating something deeply to someone. Okay, so even before texting the message, you can do your magnificent outcome, and you will see that the words will flow so differently, and it will look like a poetic message, you know, something that you couldn't have written earlier, but it just so happens that it falls into place so right. Okay, so this is how we need to live, like living in gratitude. कोई भी चीज होने के पहले एडवांस में ही आप उसको थैंक यू बोल दो. तो एडवांस में थैंक यू की जो इमेज होल्ड होती है हमारे दिमाग में, उसकी वजह से सब कुछ ठीक होने लग जाता है ना. सो ये इसी तरीके से जीना. तो ये बहुत अच्छा सा क्यूट चैप्टर है, हम इसको पढ़ते हैं. And Nidhi, you're reading today, no? So Nidhi from Yeah, good morning, ma'am. Very good morning. So Nidhi from Delhi is reading it for us. And before that, we'll just go into the illustration here. So illustration में there is a door which is made here. उस दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, मतलब हम कोई काम करने के लिए निकल रहे हैं. घर से बाहर तो हम काम करने ही निकलेंगे ना. Suppose this is your house. Now you're either going to do something. You are going for a walk. You might be going to someone's house. You might be going to your say kitty party. You might be going to get your haircut done. You might be going to shop. You might be going to purchase some fruits, vegetables, groceries. You might be going to the temple. आप गुरुद्वारे जा रहे होगे, आप कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब आप जो भी चीज करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए उसमें आप देखो कि बाहर सब कुछ ब्लर हो रहा है. इतना सारा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है. वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के कारण देयर इज अ ब्लरिंग दैट वी कैन सी हियर. So this energy of gratitude, you know, enter when you get into something, and this is what actually makes a difference to the outcome. Okay, इसको एस्टन जेरी हिक्स अपनी किताब में सेगमेंट इंटेंडिंग बोलते हैं. सेगमेंट इंटेंडिंग मतलब आप डे में अलग अलग सेगमेंट होते हैं ना. जैसे अभी स्टडी सेगमेंट चल रहा है, इसके बाद मेरा मेडिटेशन सेगमेंट होगा, उसके बाद मेरा जिम सेगमेंट होगा, उसके बाद मेरा वॉक एंड रन सेगमेंट होगा, उसके बाद मेरा गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस सेगमेंट होगा, उसके बाद मेरा ऑफिस सेगमेंट होगा, फिर उसके बाद दोपहर को लंच सेगमेंट होगा, फिर उसके बाद आज शाम को वेबिनार है कोई तो वो सेगमेंट होगा, फिर उसके बाद लाइकवाइज. सो इस तरह वो चलता जाएगा. तो अलग अलग सेगमेंट्स हैं. अब मैं इनमें से चूज करूंगी कि इनमें से मुझे कौन सा आउटकम बहुत बढ़िया चाहिए होगा, जिसमें फुल प्रूफ 100% विक्ट्री. सो आई चूज कि ऑफिस में मुझे जिम का सेगमेंट में मैं चूज करूंगी कि मेरा वर्कआउट शुड बी वेरी वेरी इन्फ्लुएंसिंग ऑन माय बॉडी एंड लाइक आई रियली फील ग्रेट. उसके लिए होगा. सेकेंड होगा दैट मुझे आज एक प्रेजेंटेशन करनी है बहुत जरूरी. So that presentation comes out to be larger than life, something, the best presentation I have ever made for that presentation. फिर third segment मेरा होगा that I have to drop my son back to the airport because he is leaving today, so that he reaches on time. और अभी यही हो रहा था जब हम कल बात कर रहे थे कि like वो जो टर्मिनल 3 इतना बड़ा है, टाइम से निकलेंगे, ट्रैफिक होगा, सबके अपने अपने व्यूज आ रहे थे जब हम कल घर में बात कर रहे थे about what time we should leave to drop him to the airport. So every person in the house had a different opinion, said that T3 में walking है, 2-3 किलोमीटर तो अंदर ही चलना पड़ता है. Then it was like, oh, it is like peak office hours, traffic is going to be high. ठीक है. So मैं तो already लिख दूंगी उसके लिए that I'm so happy and grateful that we reached before time, and it was such an easy check-in for him, and easy check-in and boarding and everything, everything was so relaxed, we were all so relaxed. बस खत्म. So that is how it is. So ये 3 segments मैंने choose किए ना, तो आज हम अपने 3 segments choose करेंगे. For each of us, we will have a different schedule of the day and we will select 3 segments accordingly. So हम पढ़ते हैं इसको, ध्यान से पढ़ते हैं. हाँ जी, निधि.
आप अनम्यूट कीजिए. Day 21, Magnificent Outcomes. You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera. The grace before the play and pantomime. The grace before I open a book. The grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert K. Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life does not happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into the space. You know there's no chance at play and the gravity laws will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcome, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcome practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during the day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at the work and you're told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed,
Instead of thinking, this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes in your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience a magnificent outcome you asked, and occasionally, you won't even know how you benefited from the unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law, the changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of the day, choose three separate situations where you would like the magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of three situations you have chosen for magnificent outcomes. Just a second. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome. For the second step of this magical practice, you are going to choose three unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take three phone calls, or before you open three emails or three letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome too. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcome
you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes to a certainty in your life. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the beginning of the day, choose three things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. List your three things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. 4. As you go through your day, choose three unexpected events that comes up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Nidhi, so much. थोड़ा थोड़ा फास्ट रीडिंग था, उसको थोड़ा स्लो डाउन करो. तुम इतना फास्ट सोचती भी हो? uh, I don't know, ma'am. Maybe Yeah. I'll definitely do it. Thank you for reading so beautifully. So Thank this you. is such a wonderful chapter. One thing that I want to bring into notice is that कई बार आप ये magical outcome mostly सब लोग बोलते हैं इस वाली practice को. So you must be doing this practice, but फिर भी result उस हिसाब से नहीं आता है. Isn't it? We must have seen so many times that we really wanted something to happen in a certain way, but it does not unfold in that way. वैसे नहीं होता है. वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम करते हो तो आपको एक ट्रस्ट एंड बिलीफ के साथ करना होता है. यू हैव टू बी इन दैट अल्फा एंड सेमी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड. इफ यू आर इन अ वेरी हाई बीटा, you know, something like, I'll give you an example. Suppose you're going for your exam or some presentation and you're really nervous about it. Okay, very, very nervous. And you're like, oh God, I really hope, you know, this exam goes out well. I really hope, you know, मुझे इतना डर लग रहा है ना इस वाले maths exam से or whatever, you know, I'm always like that, very, very jittery about it. You know, ये हो रहा है. Thank you for the magnificent outcome. Then it will not happen. Because there is more nervousness, mistrust and disbelief, which is there. You're in high beta state and in a state of worry and fear. Then how can magnificent outcome happen? Because वो trust ही नहीं है, वो ease ही नहीं है. So, and ease and calmness is the prelude to any kind of a practice that we do. Okay, so that's very important. The ease and the calm. It should not be, I really hope, oh God, oh God. With that kind of a mindset, if you do the magnificent outcome, then how will it come true? So when there is an innate trust in you, you know, when you say that, you know, thank you so much, universe, for making, you know, say today's run or my athletic meet or my athletic run or whatever activity जो आप करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए सोचना that thank you universe उस activity को बहुत इतना अच्छा outcome देने के लिए. I did so well and I'm so proud of myself that I won and I did it. You know, so this is how you have to say. If you're like, oh God, you know, I really hope. This is not how this practice is done. Okay, so you just have to be, thank you universe for giving me such good marks in exam and I knew the answer to every question and my memory was working like magic. तो इस तरह से आप ease and calm के साथ लिखना होगा. Only then it will get scripted or scribed in the subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज स्क्राइब करनी है तो उसका रास्ता होता है ट्रस्ट, बिलीफ, ईज एंड काम. अदरवाइज इट विल नॉट गेट इनटू द सबकॉन्शियस माइंड. एंड कॉन्शियस माइंड से आपको रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते. कॉन्शियस माइंड का काम होता है बट परसीव करना और सबकॉन्शियस में डालना. परसीव किया, सबकॉन्शियस में डाला. परसीव किया मतलब देखा, सुना, टेस्ट किया. जैसे कोई चीज आपने खाई and you didn't like the taste of that food. Okay, so now you make a belief that उस वाले रेस्टोरेंट में ना खाना मुझे बहुत ग्रेट नहीं लगता.
because of the experience that you've had. So अब आपका जो 5 senses थे उनसे आपको वो खाना अच्छा नहीं लगा वहां का, आपको लगा बहुत स्पाइसी है, बहुत सॉल्टी है, या टेस्टलेस है, आपको ऐसा कुछ लगा. एंड नाउ फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड दैट थिंग विल गो एंड सेटल इन द सबकॉन्शियस माइंड. And when anyone talks about the restaurant recommendation, you will not give the recommendation of that restaurant. Like if I tell you we are going there to eat today, है ना, मतलब हम ताज में जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए, तो one would say that you'd say that no, don't go there, वहां पे बहुत great नहीं होता खाना. हाँ, ambience is very good but खाना is not very great. This is because आपके conscious mind ने perceive किया था, कोई चीज notice करी थी और वो subconscious में डाल दी है. Now subconscious will each time like remind you that, oh, this is to be done like this is right, this is wrong, and all that, don't do it, because of some kind of an experience you've had. ओके, कॉन्शियस का उतना ही काम होता है. लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड से अगर हम मैग्निफिसेंट आउटकम करेंगे, then it will not work with worry and with fear and with doubt and with disbelief and with concern and with tension, with that kind of a feeling. So इसीलिए sometimes when we do the magnificent outcome and it doesn't come true for us, it doesn't happen that way. फिर हमको लगता है कि देखो मैंने तो इतना magnificent outcome किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर भी this thing didn't go well, I got only 60% in my exams, and it is so much magnificent outcome. So why you got 60% in your exams in spite of doing magnificent outcome is the reason I've just told you. Because there was more tension, worry, and fear towards the exam. That, oh God, I really hope. So in the tension state, you cannot put anything in the subconscious mind. That's very, very clear. अगर आप वर्कड अप हो अपने दिमाग में and then you're doing, so just be easy and calm about your day. Keep telling that to yourself. I'm sure आपने वो Insta post देखा होगा. Keep telling yourself that that I'm always easy and calm. My mind and body is always calm, stable, and happy. My mind and body is always calm, stable, and happy. Always calm, stable, and happy. So when you keep telling yourself that, you will see that you'll become a much calmer person. Never be hyper about anything. Because universe is driving us and we are making it drive according to our thoughts and beliefs. So your self-talk, your auto-suggestion that I spoke about in the Insta, this is what sometimes we are so worked up in our head. So आज वाली practice में जो शुरू में जीके चेस्टरटन ने, ये बहुत बड़े राइटर थे अपने टाइम के, from UK, and he says that he was literally writer थे, तो वो कुछ भी लिखते थे उसके पहले he would do magnificent outcome उसके लिए, that thank you for the magnificent outcome to the great book or poem that I wrote, as if it's already happened in the best possible way. So he says that even before going to a play, even before going to the pantomime, or even before going for, like any get together or for any concert, or before he dipped the, pen in the ink, he would say thank you. Grace before eating meals, grace before going anywhere. अगर आपको लगता है बहुत ट्रैफिक मिलता है किसी रास्ते पे, just do magnificent outcome. That thank you for the magnificent outcome to the most joyful ride I had to so and so place. Suppose from here, like from Connaught Place, you have to go to South X. So it's a high traffic area generally, according to the past experiences. Going from Connaught Place to South Extension is a high traffic area. So you just have to say, thank you for the magnificent outcome, the most joyful ride and the timely arrival at South X. So just loved it. So this is all you need to do. And then sit back and relax. Okay, don't get worked up about it. I really hope my time pe pahunch jao. God, my time pe pahunch jao. Thank you for the magnificent outcome. This is not how the practice is done. Okay, just be easy and calm in the head. Try and be in that alpha kind of state of mind mostly. है ना, unless there is some kind of a threat कि आप बहुत बीटा में होते हो, मतलब बीटा में बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा है. So धीरे धीरे हम by these meditative practices जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हमको सिखाई है, and by the practices that we do, we trust and surrender so much in the universe that हम by default we get into that calm mode. हम हाइपर होते ही नहीं है, हमको पता है हर चीज हमारे ही हाथ में है, मतलब we are the controller, script writer, driver of everything. So when we know that we are that, then everything falls into place in the outside world. Okay, and this is how it happens. So
आज वाली प्रैक्टिस में जिस भी चीज में आपको कोई भी काम ऐसे करते हो जिसमें आपको डाउट आ रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि आई रियली होप ये अच्छे से हो जाए, आई रियली विश ऐसे हो जाए, आई रियली वांट दिस टू हैपन लाइक दैट, जस्ट डू योर मैग्निफिसेंट आउटकम, सिंपल, एज इफ इट्स ऑलरेडी डन, और उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो, है ना, जैसे वो हो चुकी है ऑलरेडी और आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो, दैट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश 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 डैश, thank you for the magnificent outcome to the great meal time we all enjoyed together, it was so much fun. Suppose आप vacation पे हो and you want to make a reservation to a very nice cafe, and you know that cafe is very full and normally people don't get the reservation there. So all you need to do is thank you for the magnificent outcome to the best table we got in the cafe with a beautiful view. That's it. Okay, and then don't let that belief जो आपकी थी कि उस वाले कैफे में कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, अगर आपको ये वाला था कि उस कैफे में कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो हमेशा फुल रहता है, और वो भी एक दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलता. So you don't have to get into that. When you want something, please create it. That is the whole fun of doing these practices. Otherwise, what's the fun? मुश्किल चीजें ही तो करने के लिए हम यहाँ पर हैं. इजी चीजों के लिए हमको इतना सुबह सुबह उठ के कोई ये इतना पढ़ना और अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है. इजी चीज तो कोई भी कर सकता है ना. जो वैसी चीजें होती है ना, उसमें थ्रिल एंड एडवेंचर लाइफ का उसी में होता है. That real joy, that real thrill, that real adventure lies in doing things that are impossible. Make everything impossible possible. Then that is the real fun of using the law of attraction and gratitude power. Gratitude, love और law of attraction को use करने का बड़ी बड़ी चीजें करो जिसमें मस्ती आए, जिसमें लगे कि अच्छा ये नहीं हो सकता है now, but you don't have to declare it to the others. Okay, people will think you're stupid or something. You don't have to declare it to anybody. सब लोग इस frequency में नहीं होते हैं, तो आप उनको नहीं बोल सकते ये वाली चीजें that मैं ऐसा करके दिखाऊंगी. Don't say. They might just laugh at you. I mean, like, or people don't understand, saying क्या है तुम्हारे, you are whatever, so उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ हिंडर करेगी, बिकॉज लॉ ऑफ एसोसिएशन वर्क करता है 24/7. व्हाट कंपनी डू यू होल्ड डायरेक्टली अफेक्ट्स योर लाइफ. Okay, if you are with losers, you will start becoming a loser. If you're with winners, you will start becoming a winner. If you're with people who have created life according to them, you will also become like that. कहते हैं ना, when you're with 5 genius, you are the 6th one. When you're with 5 losers, you are the 6th one. When you're with 5 gossip mongers, you are the 6th one. When you are with 5 achievers, you are the 6th one. And you will see your life escalate. आपके लाइफ में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज और चीजें होने लग जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो रहा. आउट ऑफ द बॉक्स, एब्सोल्युटली. You had not even thought about it and it'll just start happening. And it'll happen in the best possible. That's called law of association. तो आप किनके साथ क्या कंपनी रखते हो, किनके साथ आप एयर टाइम दे रहे हो, किनके बारे में सोच रहे हो, किनसे आप शेयर कर रहे हो, किनके साथ उठ बैठ रहे हो, किनसे बातें कर रहे हो, किनसे थॉट्स एंड व्यूज एक्सचेंज कर रहे हो. बहुत ध्यान रखो इन सब चीजों का. ठीक है, बी नाइस टू एवरीबॉडी, बट दिल की बात हर किसी से नहीं करनी है. ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम उस पर्सन के साथ स्पेंड नहीं करना है who is not fighting the battle hard, who's not working so much on themselves. It will start affecting your energy. आपके हेल्थ में चैलेंज रहेगा, आपके पैसे में चैलेंज रहेगा, आपके रिलेशनशिप में चैलेंज रहेगा, बढ़ ही नहीं पाओगे आप आगे. तो ये लॉ ऑफ एसोसिएशन इससे बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा. मेरी एक कोलीग है और जो उनका ना वो चैंटिंग जो होती है ना, वो चैंटिंग है, मम्मी बीमार है, यही चैंटिंग है. और ये मेरे ख्याल से 1 साल से चल रही है. मतलब खाना खाएंगे, मैंने कहा कि ये वाला, मैंने कहा यू स्टार्टेड ईटिंग खिचड़ी नाउ, बिकॉज वो कभी वैसे खाना लाती नहीं थी. हाँ मम्मी बीमार है ना इसलिए. अच्छा ये कहते मम्मी बीमार है. उनकी मम्मी 1.5 साल हो गया है, वो ठीक ही नहीं हुई है, एंड इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. Then I really sat through one day with her. I said, see, I'm absorbing this because I'm spending time with you from morning 9:30 till evening 6:30. Can you please stop telling this? तो उनको ये कह के उनको 1 साल लगा. इतनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी उनकी, तो उनको 1 साल लगा. बोलती है हाँ मैं मॉम्स रिकवरिंग, या मैं मॉम्स रिकवरिंग. मैंने कहा नाउ इफ यू से अगेन, मतलब अभी भी बीच बीच में मम्मी बीमार है, मैंने कहा व्हाट, लाइक, एंड आई अट्रैक्टेड इट इन माय लाइफ. यू सी, मतलब
1 साल से बोल बोल के मैंने कहा अब ये सेंटेंस इसको डिलीट करो, फिर मैंने उसका एनएलपी से डिलीट किया वो वाला सेंटेंस, एंड आई सेड मॉम्स रिकवरिंग सो फास्ट, मॉम्स रिकवरिंग सो फास्ट, आई सेड दिस इज व्हाट यू हैव टू से constantly, mom's recovering so fast. So abhi koi पूछ रहा था ऑफिस में, oh, and how's your mom? So she looked at me and she laughed and she said, वो रिकवर कर रही हैं. That is how it is. हम क्रिएट करते हैं बहुत सारी सिचुएशन, है ना, अपने बिलीफ, अपने अपने ऑटो सजेशंस, अपनी टॉक से, तो हमको वो करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. So this is who we need to be. So इसीलिए let's create impossible things more and more. जिन चीजों में आपके बिलीव्स ऐसे हैं जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए, जैसे कुकिंग फॉर 20 पीपल, मे बी यू डोंट लाइक कुकिंग और वॉट एवर इट इज, लाइक आपने कभी भी वर्कआउट उस लेवल पे नहीं किया, यू नेवर रन बिफोर, वेर इज यू नो दैट यू शुड बी रनिंग फॉर अ गुड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ओके, बट देन यू से मुझे ना रन नहीं किया जाता ना बिकॉज मेरे नीज ऐसे हैं, मेरा ना मसल्स मुझसे नहीं होता. ट्राई रनिंग लिटिल बिट, स्टार्ट विथ 200 meters, है ना, 200 meters रन करो बस, प्लेस ए से प्लेस बी, try and run. Yeah, there you will get breathless, but thank you for the magnificent outcome to the great new start of my running schedule now. That's it. Okay, so यही करने के लिए हम यहाँ पे हैं, वो सारी चीजें करने के लिए जो किसी का सपना हो सकता था. मैंने आई थिंक एक वो स्टोरी डाली थी अभी, that be grateful for the every day that you're living could be someone's dream. Be grateful for every day of your life could be someone's dream. You know, जो हम करते हैं वो किसी का सपना हो सकता है. जैसे हम लोग जीते हैं कि हमें जो मर्जी, we can eat whatever we want, we can go wherever we want, we have that freedom, you know, we have money to spend on eating in a restaurant. All these things could be someone's, even going for a walk could be someone's dream. वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू, you know. So every day of your life can be someone's dream. So be grateful. It was such a powerful quote, powerful sentence. This is the reason I put it in the story. So hence we need to create the life and be positive and be easy, be calm and believe that you can do it. So आज की practice में सुबह count my blessings है, where we write the 10 blessings. रात को magic rock है, magic rock that you hold the rock. Think through the day of all the good achievements that you've made. Even if it was a small thing like, you know, just eating a little piece of, you know, say whatever, say a nut, dry fruits जो आपने खाए उसके लिए thank you बोलो. For a walk that you went for, say thank you for it. For the beautiful sunshine that was coming and flashing on your face, uske liye thank you. For the little things and little joys, celebrate all those little moments. So do that, and say thank you for it in the night when you're holding that magic rock. है ना, बहुत अच्छे zone में सो और बहुत अच्छे zone में सुबह सो के उठो. So these are the two practices that would remain consistent. And दिन में किस मतलब आज ये magnificent outcome हमको अभी करना होगा within an hour, because ये पूरे day में हम 3 events को select करेंगे. Select any 3 things that are going to happen today. और उनके लिए मतलब जो you really want good outcome out of them, you know, ऐसी चीजें 3 selected, and you have to sit in the morning within an hour from now. By 8 o'clock, please do this practice. So आपको लिखना है, thank you for the magnificent outcome to a great whatever, a gym workout, a very lovely walk, you know, where I see beautiful flowers and sunshine and butterflies and differently colored flowers and a lot of nature and smiling faces. So just that thank you for the magnificent outcome to the most amazing, joyful, happy walk. Okay, this is what you can, this is just as an example. It might not be your walk, this thing could be something else. हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाना है, बैंक जाना है, कहीं और जाना है. It could be anything, or you have a meeting today, or you have anything of sorts. Maybe you have a kitty, maybe you have a lunch with someone, maybe you're going to cook something really nice in the house when you thought that आज मैं ये बनाती हूँ. Suppose you're making some shahi paneer or some kadai paneer or whatever it is, or you're making some nice vada sambar. So to make that vada sambar also, you have to say thank you for the magnificent outcome or the tastiest vada sambar that I made today that everyone loved and complimented me for. Okay, this is how you need to write. तो 3 चीजें आपको लिखनी है आज जो डे में scheduled है. उनका magnificent outcome लिखना है. हिंदी में हम इसको अद्भुत परिणाम बोलते हैं.
तो किसी भी चीज के लिए मैं शुक्रिया देती हूँ अद्भुत परिणाम के लिए कि मैंने इतना अच्छा बड़ा सांभर बनाया कि सबको बहुत पसंद आया और उनको सबको बहुत टेस्टी लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हमको लिखना है आज। तो तीन ये एक्सपेक्टेड तो है ही, ये तीन चीजें जो हमको करनी है। हमको एक बड़ा सांभर बनाना है, हमको सुबह वॉक करने जाना है, और हो सकता है हमको शाम को कुछ और करना हो, मतलब कोई भी दिन में जो हमारी कोई चीज होने वाली है। तो इन तीनों चीजों के लिए हम सुबह ही लिख देंगे, है ना। और तीन अनएक्सपेक्टेड चीजें, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिनकी उम्मीद नहीं थी आपको। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऐसे होते हैं ना, कई बार somebody just says that want to talk to you, can you call me back, ओके इस तरह का मैसेज आया, या सडनली कोई ईमेल आई है एंड यू नीड टू रिप्लाई दैट, और वट एवर इट इज फॉर दैट मैटर। जो भी अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड यू कैन नॉट राइट इन डू बिकॉज इट सडनली, कैन यू गिव मी अ कॉल डजंट मीन दैट you कैन नॉट राइट दैट इन डू। So you have to be like, thank you for the magnificent outcome, to whatever, like जो भी चीज है, to a great email answer reply that I could give. It was so appropriate, and I sounded so good in my email. So thank you so much, or whatever. Thank you for the magnificent outcome, to the great phone call that I made to so and so, जिसका भी message आया था that can you please call me back, उसके लिए इस तरह। So 3 unexpected, you have to think in your mind and do it. Okay, the expected ones जो आपको भी लिख के करना है, सुबह लिख के करना है। तो ये है बस आज की प्रैक्टिस। Okay, so now we go to the other book, Breaking the Habit of Being Yourself. एंड हम बीच में से कहीं शुरू कर रहे हैं बिकॉज yesterday we had to kind of stop here, becomes your reality तक। So हम इसका afterword पढ़ रहे हैं। Afterword is, you can say that Dr. Joe Dispenza is summarizing the book for us because we are done with this, the main content of the book, जो body of the book है, that's technically over. Okay, so he's just summarizing it for us before we start a new book in a couple of days. And that is what we are going to read today. And Rashmi is reading from Canada. Yeah, hi everyone. Thank you Priya for reminding me, क्योंकि कनाडा में आज 13th ही है, अभी मुझे लगा कि मैं 14th को पढ़ रही हूँ। But good that you reminded me कि I was also asking Priya that is she even there on the call? नहीं, I checked with Priya पूरी and she said, मैं प्रिया को बोल रही थी तो मुझे शर्म आ जाएगी कि मेरी अपनी बड़ी बहन वो भूल गई। Guys, Rashmi ma'am is ma'am's sister, ma'am ki My elder elder sister. sister. She used to be so much help to us earlier. मैम ही जब मैम नहीं होते थे, मैम के हम लोगों को ना ये नहीं आता था, ट्यून इन करना नहीं आता था, जूम को कैसे लाना है एंड कैसे बुक को लाना है, everything was taken care by Rashmi ma'am and her daughter. So thank you so much, Rashmi ma'am. Actually, you are so amazing person, and you are actually guide to us, to each and every one thank of you. us. You are brilliant. Thank you so Priya much. is always full of appreciation for anything and everything, है ना? I know. Actually, Rashmi is like that, Rashmi is like actually. that. Very sincere and very super meticulous with everything in life. Even now, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, she still comes to my house and she arranges my cupboard and kitchen, and like she's like वो साफ वाफ कर रही होती है, तो ये ठीक कर ले, वो कर ले। मेरा क्लोजेट अभी भी यही आके इंडिया जब आती है तो she is looking after my house even now, even after so many years of me being married. Hanji. So we'll start from, so many we have to start from here. If you stop believing that the thought is real. So कल जब हमने पढ़ा था, सारा उन्होंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने समझाया था that don't get into that materialism of things, of running behind things, and don't be victim to your body. So वो अभी आगे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे कि किस तरह से हमको वी हैव टू गो फॉरवर्ड इन आवर जर्नी। एंड बार बार जो नेगेटिव चीज हमने अपनी लाइफ से निकाली है, could be anything, could be reducing the intake of sweets, मतलब मीठा खाना हमने कम कर दिया है, हमने वो चीज हटाई है। हम बार बार बहुत विक्टिम हो जाते थे ऑफ एंगर, बार बार हमारा एंगर शूट अप हो जाता था, तो हमने वो उस चीज को अपने लाइफ से हटा दिया है। एनएलपी टेक्निक्स जो हमने की थी कि बॉक्स में बंद करके उसको समुद्र में फेंक दिया, वो उस तरह की जो चीजें हमने की थी,
So again and again, it might, something might happen in our life that you are attracted towards that negative past, whereas you know that you should not be doing it. So he says that just be in that moment and अपने दिमाग को strong करना सीखना. And वैसे भी when you meditate, you get into that zone of being mentally very strong. Mentally and emotionally, you become very strong as a person that you can withstand anything at all. Okay, so हम आगे पढ़ते हैं. If you stop believing, how many start reading, please? If you stop believing that thought is real, you will fall back into materialism and stop doing the work. You will simply choose some emotional addiction or habit of immediate gratification and then talk yourself out of possibility. Herein lies the dilemma. The future reality we create in our minds does not yet provide any sensory feedback. And by the quantum model, our senses should be the last to experience what we create. For this reason, many of us make materialism our law once again, and we go unconscious. I want to remind you that all things material come from the invisible field of the immaterial, beyond space and time. Simply said, by planting seeds in this world, you see that in time they bear fruit. If you can experience a dream so completely in mind and emotion within the inner world of potentials, then it has already happened. So just surrender. It has the sprout into the outer life. It is the law. But here is the hardest part of the whole process, making or taking the time for your precious self to actually do it. That's it. We are divine creators. It is what we do when we are inspired and pressed to know more. But you and I are also creatures of habit. We develop habits for everything. We possess 3 brains that allow us to evolve from knowledge to experience to wisdom, to make whatever we learn implicit through the repetition of experience. We can teach the body to become the mind, and in is our definition of a habit. The problem is that we have developed habits that limit our true greatness. The survival emotions, which are so addictive, cause us to live with limitation, feeling separate from the source, and forget we are creators. In fact, the corresponding states of mind that correlate with stress truly are the reasons why we are controlled by our emotions, live by a lower denominator of energy, and are enslaved by a set of beliefs rooted in fear. Their so-called normal psychological states have been accepted by most as ordinary and common. They are the real altered states of consciousness. Hence, I want to emphasize that anxiety, depression, frustration, anger, guilt, pain, worry, and sadness, the emotions regularly expressed by millions of people, are why the masses live life knocked out of balance and altered from the true self. And maybe the supposed altered states of consciousness achieved in meditation, during true mystical moments are actually natural human states of consciousness, and we should strive to live by on a regular basis. I accept that contention as my truth. It's time to wake up and to be the living example of the truth. It's not enough to espouse these understandings. It's time to live them, demonstrate them,
and be at cause in all areas of our life. When you and I embody such ideals as truth and make them a habit, then they innately become part of us. Yeah. So Mini will just take a pause here and I'll kind of just decode it because ये बहुत theoretical format में लग रहा है पूरा. So इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमको ये समझा रहे हैं that हम creatures of habit हैं, no doubt about it. So वो बता रहे हैं that बार बार कोई चीज आपको negative harm करेगी. एक तो you know like I just want to make it very simple and easy in the sense that अगर आप रोज ये thoughtlessness या silence में जाते हो and every day you create, you pause all the thoughts in your mind 2 to 3 times in a day. Nothing is going to be difficult for you because as I mentioned, that वो subconscious mind starts gaining that power. एंड क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी, क्योंकि पूरा न्यूरोसाइंस के हिसाब से ब्रेन और पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम तो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है. एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज कनेक्टेड टू द नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिन हो रही है. सो ब्रेन में जो चल रहा है उनका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी में हो रहा है ना. सो जो जीन्स भी बन रहे हैं नाउ, वट एवर जीन्स जो बन रहे हैं, नॉन स्टॉप देयर इज अ रेप्लिकेशन ऑफ द सेल्स गोइंग ऑन. मतलब हमारे जो सेल डिविजन होता है ये नॉन स्टॉप हो रहा है. अभी भी बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं. अभी जितनी देर में मैंने बोला है मेरे 1 मिलियन सेल्स ऑलरेडी डिवाइड हो गए. अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन सेल्स इतनी देर में ही डिवाइड हो गए. ठीक है, अब मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे दिमाग में भी चल रहा है ना. मेरे ब्रेन ही तो प्रोसेस कर रहा है ना ऑल माई स्पीच और वट एवर टॉक दैट आई एम मेकिंग. सो न्यूरोलॉजिकली मेरे उन जीन्स पे भी, जो सेल डिविजन में जो जीन्स भी तो स्प्लिट हो रहे हैं ना. एक पेरेंट सेल होता है, सेल डिविजन ऐसे हो ना, एक पेरेंट सेल होता है, उससे 2 डॉटर सेल बनते हैं. ठीक है, तो एक पेरेंट सेल जो अभी है इट हैज प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स. तो पेरेंट सेल के जो जीन्स और न्यूक्लियस होता है वो दोनों डॉटर सेल में भी जाते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. पेरेंट सेल के एग्जैक्ट जीन्स नहीं जाएंगे डॉटर सेल में. डॉटर सेल्स के जो जीन्स बनेंगे वो उस वक्त आपकी क्या फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है उस बेसिस पे जाएंगे. तो पेरेंट सेल में था कि ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर के जीन्स हैं सपोज. सो जो डॉटर सेल बन रहे हैं उसमें वो डाइल्यूट होके आएगा बिकॉज मैं उसको बहुत अच्छे एनर्जी में, वो सेल डिविजन हुआ है मेरा. व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक्स एंड आई एम सेइंग थैंक यू, आई एम एडमायरिंग द सनराइज, I'm loving the space I'm in right now, I'm really in gratitude and love, है ना. सो मेरे जो जितने भी सेल डिविजन इस टाइम हो रहे हैं व्हेन आई एम इन ग्रैटिट्यूड एंड लव, और व्हेन आई हैव बीन मेडिटेटिंग फॉर अ वाइल. मेडिटेटिंग फॉर अ वाइल डजंट मीन दैट एज आई मेंशन कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए करो दिन में 3 बार 4 बार. 1 मिनट के लिए करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है ना. तो आप वो भी करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीन्स भी बदलते जा रहे हैं. तो वो डाइल्यूट होते जाएंगे. जैसे अभी बहुत हाइपरटेंशन के जीन है या डायबिटीज के हैं, हाई ब्लड शुगर, तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होके वो ठीक होंगे. फिर उसके बाद वो जो डॉटर सेल बने हैं वो 3 दिन के बाद वो भी डिवाइड हो जाएंगे और वो डॉटर सेल खुद अपने आप में एक पेरेंट सेल बन जाएगा और उसके 2 डॉटर सेल होंगे, है ना. तो इस तरह से हमारा सेल डिविजन नॉन स्टॉप हो रहा है. इसको हम बोलते हैं माइटोसिस. बाय द वे आई नो इट्स नॉट अ साइंस क्लास बट थोड़ा थोड़ा सीखना बनता है ना हमारा. तो ये माइटोसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी में जिसको हम सेल डिविजन बोलते हैं ये लगातार चल रहा होता है. हर सेल एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाता है और वो 2 डॉटर सेल बनाता है. तो ये माइटोसिस से ये सेल डिविजन होता जाता है होता जाता है होता जाता है एंड दिस इज हाउ सेल डिविजन हैपेंस. ठीक है, सो उस हिसाब से जेनेटिकली आपके जीन्स बदलते जा रहे हैं और जो आपके बीमारी वाले जीन थे दे बिकम मोर डाइल्यूटेड मोर डाइल्यूटेड मोर डाइल्यूटेड मोर डाइल्यूटेड. मेंटली आप चेंज होते जा रहे हो बिकॉज आपका लिम्बिक ब्रेन जो आपको बहुत हाइपर इमोशनल करके पहले रखता था एंड यू ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम वेरी इमोशनल, आई क्राई वेरी इजीली. यू वॉचिंग अ मूवी और आपके टप 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 आंसू निकल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट वो एक्टर्स एंड एक्ट्रेस है और उनको पता भी नहीं कि क्या चल रहा है. मतलब उनको तो वो सीन कट करके देते हैं ना, सिर्फ वो 1 मिनट का सीन होता है, उनको समझाते हैं फिर वो एक्टिंग करते हैं, बट स्टिल वो हमारे इमोशंस को ड्राइव करने में केपेबल है. मूवी देख के कोई या कोई सीरियल देख रहे हैं जिसमें somebody is when the villain dies everybody stands up and claps the hands and whistle बजाते हैं, ताली बजाते हैं जब विलेन की डेथ होती है मूवी में, जबकि सबको पता है कि वो विलेन तो बहुत अच्छा इंसान है रियल लाइफ में, बट स्टिल वी गेट कैरीड अवे एंड वी डू ऑल दोज थिंग्स, है ना. सो ये सारी चीजें जो होती है आप बहुत इमोशनली ड्रिवन होते हो, ये अच्छी बात नहीं होती है. Negative, yeah. Of course, you can have like some really nice emotion of love, joy, compassion, excitement and all that, satisfaction. So that's there. But वो जब हम ये word use करते हैं that I'm very emotional,
इट डज नॉट कॉनोटेट अ गुड थिंग. इट मीन्स आई एम हाइपर इमोशनल. तो आप अपने लिम्बिक ब्रेन को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर रहे हो, बिकॉज आप क्रिएटर नहीं हो. आप इमोशनल तभी होते हो जब आप क्रिएटर नहीं होते हो. आपका लिम्बिक ब्रेन और आपका नियोकॉर्टेक्स ब्रेन साथ में काम नहीं कर सकता. नियोकॉर्टेक्स आपका इंफॉर्मेशन सीख करके मन पक्का बनाता है that you've decided that you will not smoke, or you'll not drink too much, or you'll not do this, or you'll not lie, or you'll not like whatever things that मैं ज़्यादा मीठा नहीं, I'll not eat too much sweets, or I'll walk for 1 hour every day, or I'll start doing some push-ups, or I'll start doing some strength training. Now आपने ये creation का process शुरू किया था by doing those things, by feeding something new in the neocortex brain. है ना, कोई अच्छी चीज कि मैं रोज वॉक पे जाऊंगी. आई विल डू I'll start doing push-ups. I'll start with 10 push-ups right now. I will do 10 push-ups for 7 days, then I'll make it 20 after 1 week, after 7 days or 10 days, whatever. ठीक है. सो अब आपने न्यू इन्फॉर्मेशन डाली है. न्यू इन्फॉर्मेशन को जब तक आप रिपीटेडली नहीं करोगे तब तक इट विल नॉट बिकम योर हैबिट. वो नहीं जाएगी नीचे सेरिबेलम में, वो वहीं रहेगी सुपरफिशियल लेवल पे. आज किया, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 5 दिन किया, है ना. सो मेक दोज योर हैबिट. यूज योर न्यू आइडियोलॉजीज एंड द न्यू कॉर्टेक्स में जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, and whatever it could be, it just could be my income is increasing constantly and I'm prospering, month after month after month I'm prospering. I receive money from multiple sources of income with ease, enjoy doing what I love. आप ये न्यू इन्फॉर्मेशन, ये भी तो न्यू इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. सो ये न्यू इन्फॉर्मेशन डाल के आप उसको लगातार करो, नहीं तो आपको सबकॉन्शियस सीरियसली नहीं लेता, और वो चीज यू विल नॉट हैपन इन योर लाइफ अगर आप उसको रिपीटेटिवली नहीं करोगे. और आपको ये लिम्बिक ब्रेन वाली जो स्टोर हाउस ऑफ इमोशंस है, बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड हेट एंड डिस्गस्ट एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस, वो आपको धीरे धीरे वो अपने आप श्रिंक होने लग जाता है. आपको पता है फिजियोलॉजी के हिसाब से वो लिम्बिक ब्रेन अपने आप छोटा होने लग जाएगा, उसका साइज श्रिंक होने लग जाता है. और न्यूकॉर्टेक्स जिसमें आप, क्योंकि यू आर अ लर्नर, सो यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, यू आर इम्बाइबिंग न्यू थिंग्स, यू आर इंटरनलाइजिंग न्यू थिंग्स, एब्जॉर्बिंग न्यू थिंग्स. बिकॉज ऑफ दैट आपका कॉर्टेक्स ब्रेन का साइज भी बढ़ जाता है, वो बहुत ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, और आप एक बहुत पावरफुल क्रिएटर हो जाते हो. आप देखते हो, आप बोलोगे और वो हो जाएगा. आपने बोला है कि ये ऐसे ऐसे होगा, हाँ हो गया, वो डन. फिर आपको ना स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है, ना 555 करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज हु यू हैव बिकम बाय जस्ट लर्निंग. और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अपने आप हील एंड रिपेयर होते रहते हैं साइंटिफिकली, है ना. जैसे आप लर्निंग का वो करते हो, आपको आपकी न्यूरोजेनेसिस होती है. न्यूरो मतलब न्यूरल, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं. जेनेसिस का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन. तो आपकी न्यूरोजेनेसिस, न्यू नर्व्स आर गेटिंग, मतलब आपका दिमाग उम्र के साथ साथ और तेज होता जा रहा है. दैट्स व्हाट इट मींस. न्यूरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, आपके नए ब्रेन के सेल्स बनते जा रहे हैं और उनका कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है. इसीलिए हम बोलते हैं कि एज और आपकी एजिंग ये दोनों अलग अलग चीज होती है. इट्स नॉट सेम. देयर आर पीपल जो एक्चुअली दे माइट बी 65, बट उनकी बायोलॉजिकल एज सिर्फ 30 होती है, 35. उनकी बॉडी अंदर से 35 की तरह होती है. तो हम तो देखते भी नहीं लोगों की ना वो एक्चुअल एज. एक्चुअल एज बस हम इसलिए देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है उनकी बायोलॉजिकल एज और एक्चुअल एज में. तो आप अपने आप को हमेशा अंदर से यूथफुल जवान बना के रख सकते हो, बिकॉज हमारे मेजर्स में, इवन एट VLCC, आई मीन लाइक आई रिप्रेजेंट VLCC एशिया, राइट. सो इवन एट VLCC हम आपकी दोनों उम्र देखते हैं. एक्चुअल एज तो आती है आपकी, मतलब वो तो हमको मैनुअली फीड करनी पड़ती है मशीन में, है ना. वो मशीन इंगेज करती है, मैनुअली फीड करनी पड़ती है, बट मशीन हमको वो बता देती है कि आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है, अंदर से आप क्या उम्र है आपकी, अकॉर्डिंग टू योर तो अब आप सोचो कि इस एनर्जी में जब हम रहते हैं, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमको समझा रहे हैं, तो उस एनर्जी में जब हम रहेंगे तो हमारी लगातार न्यूरोजेनेसिस हो रही है, आपके जीन्स बदल रहे हैं. सो फ्रॉम इनसाइड योर सेल्स आर गेटिंग यंगर एंड हेल्दियर, राइट. न्यूरोजेनेसिस में यू मेकिंग न्यू नर्व सेल्स. अब आप बहुत जल्दी जल्दी परेशान नहीं होगे, है ना. जब न्यूरोजेनेसिस इसीलिए हो रही है कि आपका लिम्बिक ब्रेन ड्राइवर नहीं है अब. मतलब आप इमोशनली ऐसे ड्रिवन नहीं हो कि आपका मन कर रहा है, आप वीक हो गए कि चलो आज एक और, आपने सोचा कि आई विल नॉट स्मोक सिगरेट्स, अगर आपने ये है दैट आई लुक आफ्टर माय हेल्थ, तो बार बार लिम्बिक ब्रेन बोलेगा अरे ले लो, छोड़ो, कोई बात नहीं, 1 से क्या होता है, 2 से क्या होता है. नो, दैट मीन्स आप योर लिम्बिक ब्रेन इज ड्राइविंग द होल शो नाउ अगेन.
Okay, so you have to decide when I will not do it, I will not do it. Because growth is only there जब आप neocortex में neurogenesis वहीं होगी, वहीं से बॉडी हेल्दी होगी, वहीं से आपके जीन्स अच्छे होंगे, वहीं से आपका दिमाग तेज होगा, वहीं से आपको फिजिकल स्टेमिना स्ट्रेंथ आएगी, वहीं से आपके मसल्स बनेंगे, वहीं से आप अच्छा फील करोगे, वहीं से हैप्पीनेस आएगी, वहीं से ग्रोथ आएगी, वहीं से पैसा आ रहा है, वहीं से कैरियर आगे जाएगा, वहीं से आप एक्सपेंसिव तरीके से सोचोगे. जब लव ग्रैटिट्यूड उस एनर्जी में होते हो, एंड व्हेन यू मेडिटेट, just go in that pockets of silence multiple times during the day. That's it. That is, and that's not doing too much. सोचो अगर पूरे दिन भर के 5 मिनट से आपके 24 hours derive हो रहे हैं, 5 मिनट ही तो टोटल मिला के आप साइलेंस में रहोगे ना. थॉटलेस आपको 5 मिनट से ज्यादा हम बोल ही नहीं रहे. अगर आपसे 15 मिनट्स आप लगातार रह सकते हो, नथिंग लाइक इट. बट इवन इफ यू कैन गो साइलेंट जस्ट फॉर 5 मिनट्स, इट विल स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंस टू योर लाइफ. एंड यू विल सी, इसमें लिखा हुआ है ना, व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ you will see the evidence, because सब कुछ mind होता है. It is the game of mind, totally. Mind games में mastery कर लो, and then you won every battle of your life. That's very, very. So don't fall prey to habits. So जैसे Dr. Joe Dispenza ने लिखा है that we are creatures of habits, we are creatures of materialism. So don't make those things God. Enjoy it. Don't make that God. Don't make a 7-star hotel a God. That, oh my God, wow, oh my God, wow. Yes, the experience of it, derive out of it and feel good. Okay, but that's not God. If that doesn't happen, something else happens, it's okay. Like that way. So don't make, जैसे Rhonda Byrne ने बताया था ना, don't make money the God. Use money and enjoy. Stay in that 7-star hotel and enjoy. Don't make it the God कि मतलब वही आपका मतलब लाइफ का मिशन ही वही है, पर्पस वो है. पर्पस जॉय, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस है. पर्पस 7-स्टार होटल में रहना नहीं है. रहने से ये डिराइव करना, जैसे पर्पस पैसा नहीं है, बट पैसे को पूछना है ना. इसका मतलब है आपने अपनी फ्रीक्वेंसी से उसको हाई कर दिया, अब आप उसके लेवल के नहीं हो. अगर आपने किसी चीज को गॉड बना दिया, आप उसकी फ्रीक्वेंसी के नहीं हो ना, तो वो चीज आपकी जिंदगी में आती नहीं है जब तक आप उस लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी मैच नहीं करती है. उस लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपको होना होता है. सो डोंट मेक मनी दैट गॉड, वाओ, लाइक दैट. एंजॉय. मनी लव्स टू बी यूज्ड एंड स्पेंट. एंजॉय दैट मनी. उस पैसे से जब खुशियां आती है ना, वो पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होके आपके पास इतना सारा आ जाता है कि आपके पास कभी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा उसका, है ना. तो पैसा भगवान नहीं है. Pesa is your best friend. It can be your fun. It's a means to an end. That's it. Right? It is just a means to an end. So that is what it is. So don't make materialism that thing. Whatever joy you derive out of it, you feel confidence, it boosts you, go ahead and do it. That is what it means. Don't fall prey कि वही आपकी जिंदगी हो जाए, है ना. ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं. But I think हम लोग काफी evolve हो गए हैं अभी तक. So I'm sure all of you all are very nice human beings. This because when I meet you all, I realize that you are such nice, lovely human beings. And I did meet Poonamji yesterday from Australia, and one of the nicest persons and the most gorgeous girl I've met. And I actually wrote it down for. She was so casually dressed, like in a very loose kurta, and then she was looking like a diva. So beautiful as a person also. So anytime when I meet all of you all are so lovely as people that I can totally resonate with Dr. Joe Dispenza is saying here. That you become a different kind of a person, very strong. And वो सबकी अंदर की beauty बाहर झलकती है. सबकी that inner beauty shows up on the surface, in the actions, in the way they carry themselves. It's so beautiful to meet people from the SAL group everywhere, like it's absolutely the way everybody has transformed, the energy you guys radiate, it is amazing. Absolutely. So let's just keep reading more. How many can Since start? we are wired to create habits, why not make true greatness, compassion, genius, ingenuity, empowerment, love, awareness, generosity, healing, quantum manifestation, and divinity are new habits? To remove the layers of personal emotions, we decided to memorize as our identity, to shed our selfish limitations that we have given such power to abandon false beliefs and perceptions about the nature of reality and self, to overcome our
neural habituations of destructive traits that repeatedly undermine our evolution, and to relinquish the attitudes that have kept us from knowing who we really are all part of finding the true self. I think Minnie will be able to read only so much today. I didn't even realize it's 7:04 already. So thank you so much for reading, and read again. I know you're on the YouTube and Yeah, I'm on YouTube every day because it's like time to come home from, work. So that's why. But today is like Sunday, so I was home. Okay. All right. So you can fill up the form in reading more. And thank you so much for reading so beautifully. And I love you. Pleasure. Yeah. Okay. All right. So this is what Dr. Joe Dispenza had said, that matlab, I don't even want to explain that last paragraph, because after having talked to so many of you, after having met so many of you, I think इतने mentally strong हैं सब लोग कि मतलब क्या बोले that you are victim to the habit. No, I think most of you are not. In fact, all of you are not. I mean, I've met so many in Bangalore. I've met so many in Pune. The whole group of people, Mumbai, Delhi, of course, we keep meeting, and we are meeting again on the 19th. So, like having met all of you, you see that you're absolutely like divine personalities, like that angels of God who knows, that this is how we need to live and this is who we are, and constantly polishing yourselves. So every meeting is better than the last one because of the high energy, like high watts of energy that everyone radiates, and it's lovely. So yeah, that is what Dr. Joe Dispenza is saying, that just keep your mind strong, but then don't miss out. See, dekho, consistency does not mean intensity. Consistency can mean going less in your practices one day and stepping up on the next day. Like aaj agar aapne, suppose you're doing Ho'oponopono. So you've done only for 5 minutes because you had a very busy day, but you cannot skip it. Skipping means you're being inconsistent. Inconsistency means universe does not offer itself to you in fullness. So that is what we need to kind of really take care of. Consistency means even if it is for a lesser duration of time, but do it. Let it do it. So all the things, agar magic dust everyone hai, suppose aap 8 karke you forgot about it. I mean, you just did 8 of them and then you just got busy during the day, which is okay. You did 8, no? That's called consistency. Doesn't matter you didn't do. Don't beat yourself up कि मैंने 10 क्यों नहीं किया, मैंने 8 ही किया. आपने 8 किया ना, ये बहुत बड़ी चीज है. Give a pat on your back. Say well done. Like that. Okay, that's what it means. Yes, John, you want to share? Yeah, I just wanted to, because we were talking about magnificent outcomes, I just want to quickly say something that happened. So I've never done bowling before, the one that we have. It's called bowling, yeah. So there was one day I went for bowling and I've never done it before. But since you've told about magnificent outcomes, I was like, okay, before I do it, I'm going to imagine that it's going to hit all the 8, 9 there. And ma'am, I've never done it before. So it's not like I know how to do it. It actually happened, ma'am. Like just the first time it didn't happen, but then later, I think 4, 5 times I was actually able to put it, which doesn't make sense because I don't have practice doing this. I just close my eyes and visualize, okay, I'm going to do it now. It's going to go hit and it's going to like the whole thing, the whole set is going to fall. And it actually happens. So I've been using magnificent outcomes for like literally every little thing. So just sort of thank you for that. And another thing to do with like Joe Dispenza's book, I think this last 2, 3 weeks, the number of people who've told me, bro, you have the best vibes. Like your energy is so amazing. It's insane. And I know that's only because I'm doing all these practices, ma'am. So thank you. That's all. Thank you so much. Thank you. And you're amazing. And the way you're doing the practices, I feel so proud of you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Yes, Bharti. Good morning, ma'am. So agreed with John. This is a practice which I'm easily able to convince others also to do this. Like those who are not into these practices but going for some important work on something in school, I always tell them कि यार पहले से thank you कर लो और जो आपको चाहिए वो जल्दी से बोल के बताओ मुझे क्या क्या चाहिए thank you के साथ. So they do it and after completing they said अरे हाँ यार हो गया था अच्छे से.
ऐसे पहले थैंक यू याद दिलाते रहा करो in that way. So like there's magic first step. These are the basic practices. Like I made them do it. Even those who are not in practices, they do it very diligently and nicely. Oh, And nice. whenever I also do it, I did it very nicely. Like day before yesterday, I went for shopping with one of my friends. She wanted to shop for someone very special, and she was not knowing what to get it. But then I said, okay, 3 minutes के लिए walk करो यहाँ जोर से बोल के thank you, और जब मैं stop बोलूँ तब stop हो जाना. And after that I tell her कि अब ये सोच लो कि सबसे अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है और उसे बहुत पसंद आने वाला है, उसकी स्माइल इमेजिन कर लो कि उसे बहुत पसंद आएगा ये. And then we went only one shop in Paris. We were supposed to take t-shirt, but then we found the blazer in rates of t-shirt actually. And it was just, you won't believe, like 8,500 blazer was on discount on only on 2,600. And she was like, thank you, yaar, it happened. And I said, no, this is not me, this is just what you did. And she was like, ye to easy hai, ye to main roz kar sakti hu. So those who are not into practices, they also follow it very nicely. And this is just because of you. So thank you, love you. Yeah, thank you. Great, awesome. You are really God's angel. We have to say it, you do it. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, because of the practices, everything's become so. सबको पता था, सारी किताबों में लिखा है, be very grateful, do a good. But now we have a tool to do it, no? Like ये लिख के करो, हवा को inhale, exhale करके, then say that thank you for the magical air that I breathe, magnificent outcome करो. So we have these tools and techniques to actually, exhibit all these teachings or the juice of all the books. Yes, John, I read your message when you said that Love Rampage is your Yeah, same here. favorite. Yeah. I did that love rampage 2 days before with 3-year kids. Nearby, like they were roaming outside और हमारे साथ खेलो. I said ये करेंगे पहले फिर खेलेंगे. And they were happy about it. Yeah. So when me and Sunita also walk, like after both of us go to the gym, and then when we come back, mostly either we go together or we come together one way. So then we take the whole round and coming and we do this love rampage a lot. I love this, I love that. So 10 I speak, 10 she speaks, 10 I speak, 10 she speaks, till we do 100. So this is a very common practice that we all do, and all of us must keep doing it to ourselves. So it's absolutely. वो देखो जॉन कितने सारे hearts निकल रहे हैं इधर उधर. उसका love rampage has begun. Thank you, Bharti. You are such an angel, so adorable. Thank you so much. We are so blessed to दीप्ति have you in our life. Learning from you also. दीप्ति जी, दीप्ति हाँ जी. ये मुंबई का सनराइज. अरे वाह, यस, बहुत टुडे आई सुंदर. बी बैक टू जयपुर. या ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम Yeah, and the tall buildings. टॉल बिल्डिंग्स एंड सनराइज तो मुझे आज दिखा है. यस्टरडे तो आई कुडंट सी. आज पता चला इधर बालकनी से. होगा, हाँ. Beautiful. यस, ब्यूटीफul. यस, आई कैन सी द सी आल्सो. Yeah. Oh, Poonam ji, hi, beautiful girl. You'll have to unmute yourself. You'll have to unmute yourself. You're on mute. Yes. Yeah. Am I audible now? Absolutely. Okay. तो कल का I did magnificent outcome 3 चीजों के लिए. First was to meet you by hook or crook, क्योंकि हम लोगों ने decide हुआ था कि I don't know how my day will go or how your day will Yeah. go. Up until 2 o'clock we didn't know कि हम कब मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं. But because we had I think I had written and you had accepted that yes, you can meet me after Even if it 4 is for at 10 M minutes. block. Yeah. At M block. So see how it Huh. all happened. Basically, And it happened trust me, when I got free. You happened to be in M Block. Yeah. and secondly, Kal, I was in joy, excitement. I was so happy. I wasn't 100% myself because holding your hand and feeling your, all that nerve beating from your hand. And I was holding your hand for 10-15 Wow. minutes. So, oh my In both God. my hands. It was magical. It was so magical. And after that, when I went to be with my friends, for some time, I was zoned out from that atmosphere. I was not there. My body was there, but my mind was not there. And then I was, I had all the praises ki
हाउ आई फेल्ट, क्या हुआ क्या नहीं। तो जैसे इतना कह रहे हो ना, तो हम दीप्ति वर्मा को पहले ऑनलाइन देखेंगे, वो कौन है, फिर जो तुम कहती हो तब हम सुनेंगे, बिकॉज एंड वो जस्ट बिकॉज दे आर नॉट कन्विंस्ड। पर कल मेरा वो देख के कि मैं वैसे ही नहीं जाऊंगी किसी के लिए इतनी दूर, सारी शॉपिंग छोड़ के, डिनर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, और उनको कह रही हूँ किसी भी तरह बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो दैट वाज माय फर्स्ट। सेकंड था ज्वेलरी का। ज्वेलरी आई टोल्ड यू कितने अमेजिंग प्राइस पे मुझे मैग्निफिसेंट आउटकम के बाद मिली। एंड थर्ड था कि टू फाइंड समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो एंड ऑल्सो yesterday was heart magic, and I already had that crystal heart. I'm a crystal girl. I wear different kinds of crystals, सबकी properties. And when I was in Sydney, I didn't have time to go to the shops because of various reasons. So then I sat down and I asked universe, what can I have at home which will stay with Dipti ma'am for rest of her life? And she'll always remember me. And I remembered that I've got one crystal sitting with me in the packing, in the heart of shape, in the shape of heart. So Yeah. I have no words. I have I you have as I have you as a crystal in my life as well. You, Thank you, Dipti ma'am. Thank you, thank you everyone. so much, Thank and you, Pri. such a Thank beautiful you, and such a everyone. bhola bhala person, very naive and very seedha and like a little girl. Be like that. Thank you. Thank you so much. Looking forward to see you, Bitti ji and Priya. Okay, मैम, I'll tell बिट्टी जी them को also. आपने बोला था उस दिन की बिट्टी जी जा रही हैं। आ रहे बिट्टी हैं जी एक शादी दो में बिट्टी जी और हाँ, प्रिया और प्रिया का प्रिया फ्लैग आ रही लेके हैं दोनों। जाइए, एसएल ग्रुप का फ्लैग लेके जाइए। हाँ, यस। बिट्टी जी हम सभी को हमने रिप्रेजेंट एंड करेंगे। रितु, मेरा दिल्ली में आपको मिलने का बहुत मन था, पर मेरे टाइमिंग्स वर सच। पर मैं नेक्स्ट टाइम रितु तुम्हें अच्छे से हक करूंगी, बहुत अच्छे से मिलूंगी। और एक चीज और थी, एंड यस दीप्ति मैम, द प्रॉमिस वी मेड, वी आर कीपिंग इट। That will आई be एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई yeah, कांट टेल यू। yeah, आई एम yeah. सो No, लुकिंग फॉरवर्ड टू absolutely. इट। I did speak to Poonam in the night after coming दीदी back. वापसी पे प्लान कर लेना दिल्ली में सबको मिलने आई एम का। गोइंग टू बॉम्बे। नहीं नहीं, हमने कुछ और She's ओह बिग not प्लान coming करा to हुआ है। Delhi, इट्स but ओह सो कुछ वाओ। और ह्यूज, plan किया है. Yeah. इट इज सो ह्यूज। Yeah, yeah. थैंक यू सो मच, गॉड Thank you ब्लेस so यू, much, थैंक and यू। have a great wedding. All the blessings, the showers, as I mentioned, that it will be a heavenly event. इट इज गोइंग टू बी थैंक फॉर यू मैम, श्योर। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। और वहां पे आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो Of कैसे course, नहीं but this होएगा? Priya, I don't know, but Priya का बेटा बाहर जाने वाला है इंडिया मेडिसिन पढ़ने के लिए, तो I don't know how is she scheduled, but बिट्टी जी तो जरूर आएंगे। आएंगे ना बिट्टी जी? कितना यस ढूंढेंगे, हाँ श्योर हाँ, मैम। उनके पास बस चॉइस ही नहीं है। मैम, गुरु ने कह दिया तो बस हो गया। अब बस हो गया, तो बिट्टी जी एसएल प्रिया को भी वो कुछ घंटे निकाल सकती है। प्रिया सुबह ड्राइव करके, चंडीगढ़ इज नॉट वेरी फार फ्रॉम सोनीपत, कुछ घंटे निकाल के जस्ट द डे ट्रिप। प्रिया यू कैन। मैम बिट्टी आई जी विल आपके टॉक टू पास, यू और मेरी बहनें भी to बहुत you. खुश होंगी, और मैं बहुत, आई आई विल बी बी सो देयर ना ग्रेटफुल। वर्चुअली, तो हम लोग सभी साथ हैं ही हमेशा। ठीक है, आप लोग आपस एग्जैक्टली। में बात थैंक कर यू, लीजिए। Thank you थैंक so much, and thank you Poonam ji for spending that gorgeous time and the gorgeous person that you are. You're stunning. Thank you so much. Inside out, beautiful inside out. थैंक यू, Thank you so थैंक much, and bye bye everybody. Have a beautiful Monday. Bye. Monday is a fun day. Bye Yes. bye. Every day is a fun day.